active-wise of future simple tense. Keep in mind, same thing is here, same like the previous one. The first thing, put object of active voice first. After that, put will and then be, and then third form of verb and then by phrase. Is it clear? देखो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि आप लोग जब भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब या कौन सा जो वर्ब का ये चीजें मैं भूल जाता हूँ. फॉर एग्जांपल बेसिक वॉइस के स्ट्रक्चर में तो आप लोगों को मैंने बता दिया था ना कि जिसको टेंसेस आते हैं यानी आपको ये पता है कि टेंस यानी फ्यूचर टेंस का क्या स्ट्रक्चर है और फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे. आप फिर वहां से उठा के रिमाइंड करके यहाँ पे आप इसकी पैसिव वॉइस में पुट करके आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं. मैंने आप लोगों को कहा था ना कि अगला वाला टेंस यानी जो टेंसेस है जो कंटीन्यूअस टेंस है ये नहीं फ्यूचर के बाद कौन सा टेंस आता है. फ्यूचर के बाद फ्यूचर सिंपल टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है. फ्यूचर कंटीन्यूअस आता है. फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम क्या यूज करते थे विल बी याद है ना तो वो ये विल बी वहां से होगा यानी एक्स एक टेंस छोड़ के दूसरे वाले की जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये चीजें हैं वो उठा के यहां पे रख दी आपके पास क्या बन जाएगी यानी पैसिव स्ट्रक्चर बन जाएगी फ्यूचर टेंस की जो टेंस भी आप करते हैं. फॉर एग्जांपल आप करते हैं आप कंटीन्यूअस में करना तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो क्या करूंगा वहां के टेंस की परफेक्ट टेंस की वो चीजें उठाकर यहां पे रख दूंगा. ऐसे क्लियर एक टेंस छोड़ कर वो दूसरे उठाए तो फिर आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने कौन सा वो यूज करना है. तो फ्यूचर जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें हम बी यूज करते थे नहीं करते थे यूज करते थे बी तो कंटीन्यूअस में यूज करते हैं यानी सिंपल फ्यूचर सिंपल जो टेंस था यानी एक्टिव सेंटेंस था उसमें हम नहीं यूज करते थे. हम जस्ट बनाते थे ही विल गो टू शावर टुमारो ही विल गो टू शावर टुमारो बी वहां यूज नहीं करते. बी जब पुट करते थे हम तो कंटीन्यूअस बन जाता था बी कि ही विल बी गोइंग टू शावर. इज इट क्लियर? Do you have any confusion? So this is the thing. Okay, object of active voice, then put will, then put be and confirm word and by phrase. You know about the structure, so easily you can convert. It like how, for example, this is the active sentence. For example, I will. For example, I will cook. I will cook biryani. For example, it is the simple sentence of which one is future simple tense. Any active sentence. Is it clear? Yes. Object of active voice put first. For example, biryani. Biryani will be and third form of word cooked by me. cooked By by me by me. and Me. me. Is it clear? Yes, So sir. simple. If you know about the structures, you can convert a lot of sentences. Clear? Keep in mind how to make negative sentences. So same like previous one. Just put not after the will. Biryani will not be cooked by me. Biryani will not cooked by Me. Is it clear? Yes. Do you have any confusion? No. Okay, for example, another example. आप मुझे बताएं. For example, they will take the class. The class will be take की तरफ फॉर्म क्या है? Taken by देखा क्या बन जा रहा है? Objective pronoun. Them, good शाबाश. क्या बना? The class will be taken by them. समझ ना? Okay, thank you so much. Sit down. Yes, please. Okay. We will watch TV. TV will be watched by us. TV will watched by
Good, thank you so much. Okay. You will play football. You will play football.